Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine. So we are back again with the new video, and today's video is based on Practical 16 for Class 12 Computer Science with Python code 083 practical file. And the today's practical is write the queries based on the table employee and job, and these two tables we have already created in MySQL, based on which we have 5 statements and we are going to write its query along with its output. So let us understand how to perform this practical. So here in the MySQL we are having two tables. One is the table employee, which has the attributes as EID, ename, sales and job ID, and another table we have the job, which has three attributes: job ID, job title and salary. Both the tables have one attribute in column, that is one column that is common, which is job ID. Now based on these two tables we have basically 5 commands, 5 statements are there, based on which we are going to write down its queries. First is to display employee ID, employee name and job title, job ID with the corresponding job title. So we need employee ID, employee name, job ID. These three can be taken from the table employee and job title is in the table job. So what we are going to do is we'll go to MySQL and we'll write the select statement here. Employee ID is specified by EID, employee name by ename. Then job ID is in both the tables. We will take it from the employee table, employee dot job ID, and we also need the job title, so we will say job title. And these things are in both the tables, so we will say from employee, comma, job. Since we are fetching the data from both the tables, we need to match the common column. So where employee dot job ID is equal to job dot job ID. This will be our command. As soon as we press the enter key, we will get all the 4 columns: employee ID, name, job ID and job title. So with the help of Windows Shift and S, we are going to take its screenshot. And after taking the screenshot of the query along with the output, we can paste it in the Word file. We have this query where we have the statement. Okay. So this is how we have done this. We are going to paste it properly and arrange it as per our requirement like this. Now our second statement is to display the ename and job title of those employees whose job ID is between 2 and 4. What do we need to display? Ename and job title. And in order to display the table, we have the command known as the select command. So we will say select ename, comma, job title. And both the columns are in the different tables, so we have to specify the name of the table also, from employee, comma, job. And the next condition which is given here is the job ID should be between 2 and 4. Since we are fetching the data from both the tables, we need to give the equijoin condition here, that where employee dot job ID is equal to job dot job ID and employee dot job ID between 2 and 4, like this. So we have to specify like this, so we will get the 2 records here. How we are going to get the 2 records? You can see in both the tables here. The job ID for 2 to 4 is 2, 3 and 4. Matches for 3 persons, that is 2 is Priya, 3 is Rishi and 4 is Rohan. So we can see the output here, Rohan, Priya and Rishi. So this is how we have to write down the query for this statement. We are going to take its screenshot from here. We'll go to the MS Word, bring the cursor here and paste it like this. Arrange it as per our requirement, and then we'll move on to the next statement and write its query. Now the third one is change the job ID to 10 of the employee whose employee ID is 104. जिस employee ID की, जिस employee की employee ID 104 है, उसकी job ID को हमें 10 करना है. तो job ID और employee ID आपको same table में भी मिलेंगी, वहीं से हम इसे change कर सकते हैं, that is from the table employee. In order to change, we have the update command, update employee set job ID को change करना है, तो job ID is equal to 10 where EID is equal to 104. So this will be our command. We'll get this one. And now update command will work. It will make the changes, but in order to see the changes, we need to make use of the select command. So we will say select star from employee.
सो वी विल सी द चेंजेस। जहां पे जॉब आईडी 2 थी वहां 10 हो चुकी है, जिस एम्प्लॉय की आईडी 104 थी। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ बोथ दीज थिंग्स एंड देन यू विल गेट द आउटपुट like this. Go to MS Word and then press the enter key and paste the screenshot like this. Okay, so this is how we have to do these things. This one, press the enter key. Okay, so this is how we have pasted the screenshot here. Now we will move on to our fourth statement. Display the name and job title of those employees whose name ends with I. What do we need? Employee name and job title. Employee name is in the table employee and job title is in the table job. And we have to display the names of those employees whose name end with I. So what we will say, select employee name, comma, job title from employee, comma, job where employee dot ename is equal to employee dot job id is equal to job dot job id and ename like percentage I. Percentage means any number of characters can come, I से end होना चाहिए. This is my command. हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए, जॉब टाइटल चाहिए, दोनों टेबल्स में से चाहिए जहां पे दोनों की जॉब आईडी मैच करती है और जो एम्प्लॉय नेम है वो आई से एंड करता है. सो हियर वी नीड टू गिव दिस स्टेटमेंट. ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर कमिंग? अननोन कॉलम एम्प्लॉय डॉट जॉब आईडी. ओके, यहाँ पे हमने थोड़ी सी स्पेलिंग रॉन्ग कर दी. इट विल बिकम डबली. यहाँ से हम एंटर करते हैं. सो यू कैन सी हियर रिंकी, प्रीति, ऋषि, 3 नेम्स है जिनके एंड में आई है. वी आर गोइंग टू टेक इट स्क्रीनशॉट फ्रॉम द क्वेरी. शिफ्ट एंड एस. यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम यहाँ से इसे इस तरह से पेस्ट कर देंगे. ठीक, यहाँ पे हमने नीचे लाए हम कर्सर, यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया. ठीक है, इस तरह से. Like this we are going to paste it. Now we'll move on to the fifth part. Now the fifth part says display the employee ID and sales of those employees where sales is more than 30,000. क्या क्या चाहिए हमें? एम्प्लॉय आईडी चाहिए एंड सेल्स चाहिए. एंड एम्प्लॉय आईडी और सेल्स दोनों हमारे एम्प्लॉय टेबल में है और कंडीशन है कि सेल्स जो है वो ग्रेटर देन 30,000 होनी चाहिए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन, सेलेक्ट ई आई डी कॉमा सेल्स. कौन से टेबल में से चाहिए? एम्प्लॉय टेबल में से चाहिए. तो कंडीशन क्या है? वेयर सेल्स ग्रेटर देन 30,000. सो ग्रेटर देन 30,000. लाइक दिस वी आर गोइंग टू डू एंड सी एम्प्लॉय की आईडी भी आ गई और सेल्स भी आ गई. विंडोज शिफ्ट एंड एस हम इस पे प्रेस करेंगे. यहाँ से आपने इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है. स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आप अपने कर्सर को लाओगे इसके नीचे और यहाँ पे आपने अपने स्क्रीनशॉट को क्या कर देना है? पेस्ट कर देना है. So this is how we have to arrange the data and paste a screenshot of all the 5 statements for the queries and their output. So यहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं कि हमने इसको कैसे किया है. प्रैक्टिकल नंबर 16 है. 2 टेबल्स हैं हमारे पास एम्प्लॉय और जॉब के नाम से. दोनों में 5 रिकॉर्ड्स हैं और एक कॉमन जो कॉलम है दैट इज जॉब आईडी, वो इसमें भी है हमारे पास और वो हमारे पास यहाँ पे जॉब टेबल में भी है और एम्प्लॉय टेबल में भी है. यहाँ से आप देख सकते हो जॉब आईडी. ठीक है, अब इनके बेसिस पे 5 स्टेटमेंट्स हैं जिनकी हमने क्वेरीज लिखी हैं और क्वेरीज लिखने के साथ साथ हमने उनके आउटपुट को भी इसमें अटैच किया. ठीक है, इस तरह से आपने स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है. आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. स्टिल इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स who need the concept of the practical file या जिनको practical file बनानी है. So that is it is helpful for them also. I'll meet you in my next next video with practical number 17. Till then have a good day and thank you.